Namaste everyone. Today is Monday, December 18th, 2023, and we are now ready to start the Sandhya session and Mantra Swadhyaya. So first of all, I will request Dr. Om Gandhi ji to start the Sandhya, and then it will be followed by Pravachan. Namaste Dr. Gandhi ji, आपका स्वागत है. आप please start करिए whenever you feel like. First, I want to repeat the instructions for the sitting properly, as I repeated previously before, but there might be some people who have not attended this session before. For them, it will be beneficial. If you're sitting on the floor, put a small cushion behind the back part of your buttocks. Or if you're sitting on the chair, then make sure that the chair is firm and you not lean back on the backrest. Your feet should be flat on the floor and your knees should be at the level or slightly higher than your hips. That both these conditions will change your angle of the lumbar spine and the pelvis into 95 degrees. That has been proved scientifically by the studies which was done in the late 60s and early 70s by Volvo Automobile Company. The Volvo had, at that time, there was power seats were not that popular. So the backrest and the sitting seat used to be fixed angle. So they hired a few orthopedic surgeons as consultants to find which is the best position where the people can sit comfortably. And that was 95-degree angle. So that is why I recommend to sit in that position. You will observe yourself. If you start doing that, you can sit for a longer period of time without any feeling stress on your back. And your hand should be on your knees in Yoga Mudra. Yoga Mudra is the thumb represent the Paramatma and index finger represent the Atma. And these three fingers are the Rajas, Tamas, and Sattvas, gun of the Prakriti. So this is the Yoga Mudra. So in this position, and sit straight and keep stable. So close your eyes. Recite Om 3 times. Om Bhurabhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanno Devir Abhishtaye Apo Bhavan Tupitaye Shanyor Abhis Sarvantuna. Om Vak Vak, Om Pranah Pranah, Om Chakshus Chakshuhu, Om Shrotram Shrotram, Om Nabhi, Om Hirdayam, Om Kantha, Om Shirah, Om Baubhyam Yashobalam, Om Kartal Karabrishthe, Om Bhu Punatu Shirishi, Om Bhuvaha Punatu Netrayo, Om Swaha Punatu Kanthe, Om Maha
पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनशिरसिः ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुः ॐ वाः ॐ स्वाहा ॐ महाः ॐ जनाः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सतं च विदतपसो अध्यजायत ततो रात्रजायत तथा समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रा दर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशिः ॐ सूर्य चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा ॐ शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्सर्वन्तु नः ॐ प्राचीदिग्अग्निरधिपतिः रसितो रक्षिता आदित्या ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मिस्तं वोजं वेदद्मः ॐ दक्षिणा दिगिन्द्रो धिपतित्रिश्चिराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मिस्तं वोजं वेदद्मः ॐ प्रतीचि दिग्वरुणो धिपतिः प्रदाकुरक्षिता अनम ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मिस्तं वोजं वेदद्मः ॐ उदीचि दिक्सोमो धिपतिः सब्जो रक्षिता शनिरीशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मिस्तं वोजं वेदद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मिस्तं वोजं वेदद्मः ॐ ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः शिवत्रो रक्षिता वर्षं ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः
एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मिस्तं वोजं वेदद्मः ॐ तां स्वरि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगनं ज्योतिरुत्तमम् ॐ उद्यतं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवा नामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आपरा द्यावा पृथिवीम् अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतश्चु शस्यु स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताचुक्रमुचरत् पशेम शरदाशतं जीवेम शरदाशतं शृणुयाम शरदाशतं प्रब्रवाम शरदाशतम् अदीनः स्याम शरदाशतं भूयश्च शरदाशतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवे नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात् ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 Rub your hands and generate energy. Cup your face, transfer the energy to the five sense organs. ईश्वर का धन्यवाद करते हुए स्लोली अपनी आंखों को खोलिए. थैंक यू. नमस्ते. बहुत बहुत धन्यवाद जी.
So I have to open my screen here. And everybody see my screen? Yes. Yes, we can see. So the mantra I have chosen today is this one. This is Rig Ved Mandal 10, Sukta 140, mantra number 1. It is also found in Yajurved and it is also found in Samved. So all three Veds have the same mantra. The mantra is Agne Tava Shravo Vayo Mahi Bhrajante Archayo Vibhavaso Birhid Bhano Shavsa Vaj Mukhtayam Dadhasi Dashushe Kave. The rishi of this mantra is Agni Pavakaha and the devta is Agni, meaning the subject matter is Agni. And when we do pad part of this one, it becomes Agni Tava Shravaha Vaya Mahi Brajante Archaya Vibhavaso Iti Vibhavaso Bhet Bhano Shavsa Vajam Uktam Dadhasi Dause Kave. That is the pad part of this one. I had a repetition here, so I'm going to get rid of the repetition. So we're going to break this mantra into 3 separate sentences. But before we do that, the verbs in this one are, there are 2 of them. One is right here, bhrajante. And the second is dadhasi. संबोधन में इसमें there are 4 words. उनमें से पहला है अग्नि, the other one is vibhavaso, the third one is brihad bhano, and the last one is kave. So the Sambodhan means that this has been addressed to those 4 items that I mentioned there, the words. So our first sentence is Agni Tava Veha Shrava Mahi. It's coming from here. I have just rearranged a little bit. It's coming from there. Agni Tava Veha Shrava Mahi. So we know Agni, we already know what Agni means. Agni has been defined in this platform as a platform many times. Gyan Swarup, Prakash Swarup, Parmeshwar, Agrani Parmeshwar, the one who leads. Vaya, Tava means Aapka. So we're going to go Veha. The word Veha is formed from this dhatu, Vaya, गति अर्थ में है वे, और इस पे एक पता लगता है असून, और इसके 3 अर्थ हैं जो डिफरेंट जगह पर दे रखे हैं. इसका अर्थ है गति में है, तो इसमें गति रूप कर्म. दिस इज बाय पंडित हरिशरण जी. The other one also you will find Veha, Bal or Shakti. This is in Apte Dictionary English. And the third one is An, or which also leads to Aishwarya. The more, in old days, the more land a person has, the more prosper he is supposed to be. And this one I have taken it from Nirukt, Adhyay 2, Pad 2. And the other word we have to have is this Shrava. Shrava means ये बनता है श्रु धातु से. श्रु श्रवणे, इसका मतलब श्रवण करना, सुनना. तो इस फर्स्ट सेंटेंस का जो अर्थ है वो हो जाएगा, हे अग्रणी परमात्मा,
हे सबका नेतृत्व करने वाले परमात्मा, आपका वह वह मीन्स गति रूप कर्म या ऐश्वर्य कह सकते हैं, और श्रवा मीन्स श्रवण करने योग्य। तो व्हाट इज श्रवण करने योग्य, सुनने योग्य क्या है? वेद प्रवचन महान है। मही मीन महान। सो दैट इज द फर्स्ट सेंटेंस. The second sentence is Vibhavaso. I have rearranged them. It is right here. Brajante Archeo Vibhavaso. I have rearranged it. Vibhavaso. I have broken a little bit here to clarify the meaning of this Vibhavaso. Tava Archeha Brajante. Tava again Aapka. Then what is Vibhavaso? Vibhavaso is Sambodhan Maya. That means Hey Vibhavasu. So this line again is addressed to Almighty God, who is Vibhavasu. Vibha मैंने भा means to shine, V means विशेष, so विभा means विशेष रूप से चमकना, वसु means धन, तो विभा वसु का हो जाएगा हे विशेष कांति रूप धन वाले प्रभु. And the other sentence, other word is archaya. Archaya is the plural of archi. And archi, when I looked in the nirukt, उसमें देखा इसका मतलब है ज्वाला, फ्लेम्स, और इसका मतलब ज्योति भी लिया जाता है, सेम. The other, the क्रियापद जो है इसमें वो भ्राजन्ते है. भ्राजन्ते is derived from the root भ्राजरी, which means to shine. तो ये भ्राज प्लस शप प्रत्यय प्लस जी आ जाता है. इट इज आत्मनेपद. दिस वी हैव स्टडीड दिस हाउ दिस विल फॉर्म भ्राजन्ते इजीली इन द क्लास, in the व्याकरण class. So I mentioned these things so you know they will know it immediately. तो इसका मतलब हो जाएगा हे विभावसो, हे विशेष कांति रूप धन वाले प्रभु, आपकी ज्योतियां ज्वालाएं चमक रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं, इन द फॉर्म ऑफ सन्स एंड स्टार्स. ये सारे सन्स एंड स्टार्स दैट शाइन डे एंड नाइट उस महान प्रभु की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी की दी हुई ज्योति से ये चमक रहे हैं. Our third sentence and the last sentence in this one is बृहद भानो. इसको मैंने थोड़ा अलग अलग कर दिया, इस बृहद भानो कर दिया. तो थोड़ा अरेंज कर दिया, इसको कवे लिख दिया है यहाँ पर. उसके बाद दाशुषे, ये दाशुषे यहाँ से आया है इधर. शब्शा इज कमिंग फ्रॉम हियर. देन उक्तयम, उक्तम है ये वाजम, उक्तयम ये वर्ड है, ये वाजम उक्तयम. तो ये उक्तयम वाजम ददासी. The verb in this one is dadasi. Dadasi is formed dudhai dharane, which means dharan karna. So in this sentence, there are two words that have been expressing, they are expressing संबोधन. एक तो है बृहत भानो. तो इसका मतलब हो जाएगा हे महान. भानो मीन्स तेज वाले, प्रकाश वाले भी कह सकते हैं. हे महान तेज वाले, प्रकाश वाले. कवे, कवे मीन्स हे कवि, क्योंकि ये संबोधन में हे कवे, तो वर्ड इज कवि, हे कवि. So Kavi has been defined earlier also by Dr. Sudhir Nanji. So I'm taking that He Sarvajya Parmeshwar, O all knowledgeable Parmeshwar. Shavsha, Shavsha means bulk, bal se, bulk ke shah. This is the Titiya Vibhakti of Shavas, Shavsha, Shavasa. Or Ukthaya, Ukthaya means, Ukthaya has been defined by Acharya Sayan in his Bhashya of Rigved. He said Ukthaya means Parshasya, means जो प्रशंसा के योग्य है. The word ukthaya is derived from dhatu vad. धातु vad, no, वच से ड्राइव किया हुआ है. वाजम, वाजम के भी दो अर्थ हैं. आई हैव टेकन इट फ्रॉम निरुक्त.
वाजम मीन्स अन्न को, द्वितीय भक्ति में अन्न को, निरुक्त, एंड देन ज्ञान, ज्ञान भी also उसका है, निरुक्त में दे रखा है दोनों वर्ड डिफरेंट प्लेसेस पर। दाशुषे, दिस वर्ड दाशुषे इज डिराइव फ्रॉम रूट दाशरी। दाशरी का अर्थ होता है देना, दान देना। उसमें एक प्रत्यय लग जाता है कपसु, और उसका थोड़ा और प्रक्रिया चलती है तो उससे दाशुषे बन जाता है। सो आई हैव डन ए सिद्धि ऑफ दिस वर्ड, समबडी वांट्स इट आई कैन सेंड हिम लेटर ऑन। उसके लिए व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, because this word it has come in the Vedas. If I remember correctly, it is perhaps have come in the Vedas many times, perhaps about 47 times it comes in the Vedas, all four Vedas. और ये दासु से जो है चतुर्थी विभक्ति में है। तो ये है कि दान देने वाले के लिए, इसका मतलब दासु से मीन्स दान देने वाले के लिए। दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस दासु से। So the literal meaning of this line will become then, हे बृहत भानो, हे महान तेज वाले, सर्वज्ञ क्रांतदर्शिन प्रभु परमात्मा, आप दासुषे दान देने वाले के लिए सबसा बल के साथ उक्थयम प्रशंसा के योग्य वाजम ज्ञान और अन्न को धारण करते हो। ज्ञान और अन्न इज कमिंग फ्रॉम निरुक्त। तो ये इसका लिटरल मीनिंग है। एंड आई विल प्रेजेंट टू यू अबाउट टू मोर ways that this has been defined. When I looked into the dictionary by Monier Williams, the dash over there has been defined as presenting oblations, means honoring the god with offerings. And most likely, he has taken this meaning from Acharya Sayan. Acharya Sayan has interpreted this line as follows. This is from the Bhashya of Acharya Sayan of ऋग्वेद का। तो उसमें लिखा है, हे बृहद भानो, मीन्स हे बहुत प्रकाशित होने वाले परमात्मन, आप। सो ही हैज डिफाइंड दास से एज हव्य दाता के लिए, जो जो यजमान हवि प्रदान करता है उस दाता के लिए। उक्थयम शब्शा मीन्स प्रशंसनीय बल, और अन्न को, वाजम मीन्स अन्न को आप प्रदान करते हो। दधासी, ददाती, ददासी, उसका मतलब क्या, आप प्रदान करते हो। वैसे तो ये दधासी लोट लकार में है, बट दी उसका मतलब हो जाएगा प्रदान करिए। पर ये वेद के जो वचन है दे आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइम्स, प्रेजेंट टाइम, पास्ट एंड फ्यूचर। सो इसका हम प्रदान करते हो, ऐसा अर्थ मैंने किया है। और वैसे भी उसका अर्थ वैसे भी किया गया है भाषा में जो मैंने देखे हैं। एंड वी कैन आल्सो इंटरप्रेट द सेम लाइन, आध्यात्मिक अर्थ। दिस इज गिवन बाय ब्रह्म मुनि जी एंड आई लाइक इट वेरी मच। तो पहला तो वही सेम है, हे वृत भानु, हे वृत भानु हो जाएगा, भानु महान तेज वाले, कवे मीन्स सर्वज्ञ क्रांतिशन प्रभु आप। दासुष्य का अर्थ किया हुआ है जैसे पहले आचार्य सायन ने किया है हव्य दाता के लिए। तो ब्रह्म मुनि जी सेइंग दिस, आत्मा को देने वाले के लिए, अर्थात आत्म समर्पण करने वाले उपासक के लिए, जो अपनी आत्मा को सरेंडर कर देता है परमात्मा के प्रति, कंप्लीट सरेंडर। आप उसको क्या करते हो, आप उसको उक्थयम प्रशंसनीय वाजम, वाजम हम जो अर्थ अन्न कर रहे थे, तो ब्रह्म मुनि जी ने उसका अर्थ किया है अमृत रूपी अन्न, अर्थात मोक्ष को, और शब्द मीन्स आत्म बल को धारण करते हुए। उसका आध्यात्मिक मीनिंग दिया उसी लाइन का, कि हे परमात्मा, जो आपका उपासक है, जिसने अपने आप को आत्मसमर्पण किया आपके प्रति, उसके लिए आप प्रशंसनीय मोक्ष को धारण करते हो और आत्मबल को धारण। ये उक्तम जो है, यू कैन अटैच विद बोथ, विद वाजम एंड आल्सो विद शव शामिल। आप प्रशंसनीय आत्मबल देते हो उसको, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देते हो उसको। सो फॉर दोज ऑफ यू हु मेडिटेट एवरी डे, if you can remember, you can, I present this mantra that I'm choosing is Samved ka mantra. You can use it in meditation also. And so, if you can remember these 4 5 words and you can recite in your mind,
हे वृद्धबानो, हे पिता परमेश्वर, हे महान तेज वाले आप, आत्मसमर्पण दासु से आत्मसमर्पण करने वाले उपासक के लिए उत्तम प्रशंसनीय मोक्ष को और आत्म बल को आप धारण करते हो। सो इंग्लिश में मैंने इसका अर्थ किया, देन ओ अग्निदेव पिता परमेश्वर, योर एक्शंस एंड वेद टीचिंग्स आर ग्रेट, यू आर द पोजेसर ऑफ लाइट, ये जो प्रकाश है ये आपका धन है। द लाइट और एनर्जी originating from you is shining in the sky in the form of suns and stars. Those who surrender to God completely and follow the teachings of the Vedas will acquire praiseworthy spiritual strength and also achieve moksha. So that is the end of this mantra. But the light or energy emanating from him is in the shining in the sky in the form of suns and stars. And this is also given by this Kathopanishad ka hai ye vachan. Also found in Mundak Upanishad. And we have discussed this, I think, in Rigved Bhashya Bhumika. Na tatra suryo bhati, na chandra tarkam nema, vidyute bhanti. Kuto ayam agnihi, tameva bhantam nubhati, sarvam tasya bhasa, sarvam idam vibhati. This line is very famous. Tasya bhasa, sarvam idam vibhati. तो उसका लिटरल मीनिंग मैं करने जा रहा हूँ, बाद में थोड़ा भावार्थ भी होगा इसमें कि तत्र मीन्स वहां पर सूर्य न भाति, सूर्य नहीं चमकता है, ना भाति उसका प्रकाश नहीं होता है, चंद्र तारकम न भाति, चंद्र और तारे नहीं चमकते हैं, देयर द सन डज नॉट शाइन नॉट द मून एंड द स्टार्स, विद्युत न भांति, विद्युत नहीं चमकती है, कुथा अयम अग्नि, कुथा मीन्स तो फिर क्या, अयम मीन्स ये अग्नि, फिर ये अग्नि की तो बात ही क्या है। तम एवा भांतम अनुभाति, अनुभाति ये सब उससे प्रकाश लेकर चमकते हैं, दे शाइन आफ्टर हिम, अनुभांति उससे प्रकाश लेकर चमकते हैं। तस्य भाषा, तस्य भाषा उसके प्रकाश से, सर्वम इदम ये सब कुछ विभाति चमकता है, ये सब कुछ, ये सारा ब्रह्मांड में जितने भी स्टार्स हैं, यू सी देम, they all shine because of the light emanating from him, from the energy coming from him. And so this line is very famous. It is quoted sometimes, just one line they quote, Tasya Bhasha Sarvam Idam Vibhati. Again, you can recite this one when you're doing meditation. Tasya Bhasha, hey Pita Parmeshwar, आपके प्रकाश से ये सब कुछ चमक रहा है, सन्स एंड स्टार्स। तो इसका जो अर्थ किया गया है वो है भावार्थ में, वह परमात्मा इतना भासमान है, इतना प्रकाशमान है कि वहां पर सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है, वहां चंद्र और तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, विद्युत भी उसके सामने उसके प्रकाश यानी फीकी है, फिर अग्नि का तो कहना ही क्या। उसी की आभा से यानी कि उसी के प्रकाश से सूर्य चंद्र तारे विद्युत अग्नि प्रकाश देते हैं, उसी के प्रकाश से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। So that is the end of my talk. I will stop sharing the screen. If you have any questions, I will be more than glad to answer it. Bhalla ji, I may be wrong. We do not, I may be wrong, my first statement, we do not recognize the Vedas translation done by Sion. Yeah. Because Rishi Danand has objected that because of him, Yeah. we had more suffering. Everybody took his bhash and converted it to their advantage. Am I right in my statement? देखिए उसमें कुछ कुछ वर्ड ऐसे आए हैं जो कि दे डू नॉट कंफर्म एंड आई वंडर व्हाई ही डिड दैट। जैसे हम कहते हैं कि एक मैं अभी करूंगा मंत्र, उसमें आता है कि उससे एक तत्व परमात्मा जब शुरू में सृष्टि बनी तो उससे एक उत्पन्न हुआ, मंत्र ये बोला कि एक उत्पन्न हुआ, तो उसका जो हम ट्रांसलेट करते हैं कि एक महातत्व उत्पन्न हुआ, उससे जो हम लेते हैं, उन्होंने ट्रांसलेट किया उससे एक ब्रह्म उत्पन्न हुआ।
But I again, but I again go back to Sion. Why? Because sometimes he gives us how this world was derived. He gives us the root verb and also the pratyaya that follows it. That makes my life much easier because I try to understand how these words are formed, and that's why I consult them. I don't consult them as my guide. I consult them as a reference to see what kind of meaning he has given us. In that's in this context I take it. No, my convention is correct that we do not recognize science We bhashya, we right? as long as Maharishi's bhashya is available, we should not follow what his teachings are. But sometimes his teaching matches with us, like in this mantras they do match, and sometimes they don't. In that sense, but you see, the mantra was from chapter 10, Rigved 10, and that chapter 10, mandal 10, has not been translated by Maharshi Dayanand Saraswati ji. So that forces me to go, beyond beyond what is conventional, to see what other people have done, what other people have given us the meaning. I was just curious Yeah. about But science. but there's a lot of research, as I said, that goes on my part, behind the scenes. I spend a lot of time Yes, in understood. understanding these mantras, how these words are various, what is the construction behind happening behind these words, so I can present a true meaning of these words. So I'm giving you both. I'm giving you what the literal meaning is, and also try to translate, what could it really mean. Okay. Any other questions? No. Uh, you know, there was a research that was conducted here in Princeton University long time ago. I have lost touch with that one, but at that time they were trying to create the same reaction which is going on in the sun. This is called fusion reaction. And so they did a lot of they spent a lot of money and a lot of time, on that one. And they were not able to they were able to recreate it. They were able to recreate what is happening in the sun. It's a fusion reaction. But they found out that they could not sustain this one, because they were saying that more energy was going in to create that reaction than it was coming out. So it's not feasible practically. They were trying to see if this is feasible, then instead of using nuclear reactors, they can use fusion reactors. That was their idea, but they were not successful. And then after a few years ago, 1 or 2 years ago, 3 years ago, they said, okay, this needs cooperation from international other countries as well, just not just the United States. But I don't know what is happening in the last 1 or 2 or 3 years, whether they have been successful or not successful. So if nobody has been successful in this one, so that tells me to believe ये परमात्मा की एनर्जी है जो उसको सस्टेन कर रही है in stars and the sun. And this is what the two mantras are telling us, तस्या भाषा सर्वम इदम विभाति. सारा ब्रह्मांड जो प्रकाशित हो रहा है उसके प्रकाश से हो रहा है, not by itself perhaps it is not sustainable by itself, and We should send these two mantras to Princeton. Don't waste time. नहीं, फ्यूजन के लिए तो बहुत रिसर्च होती है. I think every now and then something new comes in, some new lab is trying. But you're right, what Bhalla is saying, that so far it uses more energy than actually comes out of it. But even if they create, it doesn't bother me either way, though. yeah. It could be they're replicating what Paramatma is doing in small way. So be it. So it's no big deal either way. I don't think that even if they succeed, that's not going to take faith away from that way. This is the type of research I'm doing behind the scene, like Siddhi Abdash say. So it goes on creating all these various. Bhalaji, I think you have really learned Sanskrit. I admire all the time. When they started, I tried, I just gave up. I know, but it's a very hard work. But once you understand it, it's much more enjoyable where these words are coming from.
Yeah. And even then, as you're noticing, translations done by different people are still different sometimes. Yeah. They are How different. they interpret those same words. Yeah. That gives you a little deeper meaning, of the words. I agree. Any other questions? No? All right. So then I will do the Shanti part. And Om Dev Shantirantariksam Shanti Prithvi Shantirapah Shantiroshadhayah Shanti Vanaspatayah Shantir Vishve Devah Shantir Brahma Shanti Sarvam Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredhi Om Shanti Shanti Shanti. सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का एंड आल्सो वेरी गुड डिस्कशन वी हैड टुडे आफ्टर द मंत्रस एंड so there are no further program by EPSA, but there's a program by Arya Samaj of Atlanta, 8 p.m. Eastern time. They will have the Ramayan Katha. So if you have time, then please do join that program. So मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जुड़ने का, सुनने का, और I will see you tomorrow. If not in the Ramayana session, then I will see you tomorrow at 6 p.m. Eastern time. बहुत बहुत धन्यवाद. आपका बहुत बहुत धन्यवाद भल्ला जी. नमस्ते. नमस्ते भल्ला जी, बहुत नमस्ते. अच्छा आप हमें व्याकरण समझा रहे हैं और उसमें हमें ये फायदा होता है कि संस्कृत सीख रहे हैं हम साथ साथ. आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का और सुनने का भी. You are a very good audience also. It is my pleasure, to express. क्योंकि हमारी परमात्मा का तो यही है ना, परमात्मा का भी उसकी आज्ञा है हम पर कि वो वेद का पढ़ना और पढ़ाना दोनों बोला है. दोनों हमें करना है. अगर इफ यू नो देन यू शुड आल्सो टीच. डोंट कीप दिस नॉलेज टू योरसेल्फ, आई थिंक एक मंत्र में था कुछ महीने पहले जिसमें बोला था कि नॉलेज है एंड इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फर्दर. I don't remember the mantra, but it was in the beginning that it has to be distributed further. No, sometimes these people call me from Hindu temple and other used to call me earlier Hindu temple, and so whenever they call me these Puranic temples, I present these mantras, over there. I will. They may not want to believe it, but at least they are exposed to it. कि हाँ सुना था कभी, Yeah, I mean that's what's going to happen anyway. Anyway, ji, I'm closing the session now. Thank you very much. धन्यवाद आपका. सबको